beta. So NEET MDS 2024 results are out, and we have on our interview panel or interview Zoom interaction. First, NEET top ranker Dr. Khushal Makhija, All India rank 89, a BDS graduate from Maulana Azad Institute of Dental Sciences, a student very close to our heart and mind because we have been associated for many, many years. I remember the day first time he came in second year, right? Yes, sir. Yes. And attended dental material class that was face to face in Delhi. And today he is sitting with you at the top two-digit rank of 89. Congratulations. Congratulations, beta. To you, Thank you. your family. And Thank you. over to you, Dr. Kushal. No wasting of time. Please share your journey, good, bad, plus, minus, hard, soft, whatever you want to say to all the viewers. It's all your effort. And beta, आपका सबसे पहले I want to say this thing. Beta, नाम इतना प्यारा रखा है ना. And you have actually given खुशी to all of us. Thank you, ma'am. Thank you so much. क्या बताना चाहते हो बेटा? कैसा लग रहा है पहले? Ma'am, it's really a shock क्योंकि I was मतलब after the paper I was really like कि recheck करने के चक्कर में I messed up a lot and I thought कि यार इस बार शायद नहीं हो पाएगा, so we must start studying. But all of a sudden things turned out really well, and it's entirely because of the blessings from our elders and teachers and gurus like you and sir and the entire team. It was a really I would say challenging journey sort of. BDS second year se I got associated with you sir and ma'am from the offline center jab main Karol Bagh mein I used to come, and Yes. I was truly really motivated at that time. Since then ki meko I need to get a good PG rank, and I started my efforts from then. Then certain medical conditions came in. I was diagnosed with papillary carcinoma thyroid in my second year. So us time se studies took a really big setback. Second year topics were really messed up. I could barely pass in my examinations in second year. Third year, it was COVID times in half of the third year. So तब से I started holding up and used to see the recorded videos. And उस recorded videos से सबसे पहले उस time को use करके मैंने second year के जो मेरे backlogs थे या जो भी मेरे को messed up topics थे मैंने उनको पहले hold करा. And स्पेशली मैं मेडिसिन का एक जिक्र करना चाहूंगा कि थर्ड ईयर इज एक्चुअली हॉन्टिंग बिकॉज ऑफ जनरल मेडिसिन, क्योंकि उसमें वी आर नॉट सपोर्ट इन आवर कॉलेजेस एंड द स्टाफ इज नॉट सपोर्टिंग इन देयर. एंड आई कैन से दिस प्राउडली कि मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके नोट्स पढ़े और पास ईयर्स के लगाए थे हमारे. देन थिंग्स टर्न आउट रियली वेल. आई गॉट डिस्टिंक्शन इन माय कॉलेज इन जनरल मेडिसिन. Final year was a struggle in itself. So but there was youth support from all the recordings. मैंने हर एक subject की recordings final year में देखी थी, and I got really good in my viva sessions and answer writing skills week, and I got distinction in 5 subjects. I was the topper in my batch. You were always a topper student. You were always a topper student, bete. Then, sir, ma'am, as the internship got ended, internship में I got really a bit distracted. मेरे को था कि I have studied so much in 4 years, and मैं थोड़ा सा studies से distant हो गया था. I accept that fact, but still I studied after the internship got over. But उस time थोड़ा सा health ने फिर support नहीं करा. I got problems like pilonidal sinus मेरे को हो गया था. Then my thyroid levels got deranged a lot of a sudden. तो उसमें ही मेरा ध्यान रहता था. जो छोटी सी भी कोई, and then we start googling it and things got messed up in there. So I could not perform well in my first NEET. I got 442 rank, which was pretty good and entirely because of your support. But मेरे को ऐसा था कि I can do a bit more. Then मैंने सर से डिस्कस करा था, मैम आपसे भी डिस्कस करा था टेलीग्राम पे, एंड यू बोथ सेड कि कहीं ना कहीं रिविजन्स में थोड़ी वीक्स एंड हमें ठीक करना होगा, एंड थिंग्स विल गो आउट वेल. So I started my journey again. AIMS November में I got 162 rank. So I thought कि चल कुछ थोड़ा सा हो सकता है. Let us push my standard और push करते हैं. Then, फिर हमने daily basis पे I used to see your recording videos. मैंने
लेक्चर के मतलब जो नोट्स थे वो मैंने हार्ड कॉपी मंगा लिए थे, बिकॉज मेरे को था कि वाई टू मतलब वी कैन रेफर देम, मैं अपना टाइम नए बनाने में क्यों लगाऊं, ऐसा था, बिकॉज द टाइम वाज रियली स्मॉल। एक्चुअली तो बढ़िया होता है कि अपने नोट्स खुद बनाओ, बट फिर मैं रिकॉर्डिंग सुनता था, आई यूज टू रेफर टू दोज नोट्स। उसके बाद तो डेली शॉर्ट शॉर्ट के वीडियोस थे, लास्ट में उन्होंने बहुत हेल्प करी। देन टेस्ट जो होते थे, उन टेस्ट ने बहुत अच्छा हेल्प करा। टीएनडी वीडियोस में बेस्ट पार्ट था कि द फैकल्टीज यूज टू टेल कि पल्स में क्या गलत है, तो दैट यूज टू बूस्ट मी अप कि चल पल्स से कुछ गलत याद नहीं कर रहे हैं। ऑफ कोर्स। फिर जेआर शिप्स मैम बीच में आई थोड़ी डिस्ट्रैक्ट करने को। मेरा जीटीबी में पहले जेआर शिप क्रैक क्लियर हुआ था, मैं आए कंसल्टेड सर, सर ने कहा कि नहीं यू शुड बिलीव योर सेल्फ थोड़ा और। सर ऑल्सो शोड कॉन्फिडेंस इन मी, तो मैंने कहा ठीक है हम थोड़ा और पुश करते हैं आगे। देन Very good. That was a wise decision, beta. See, I know you for last couple of years, more than that. You are not a person for JRship. ठीक है, वो पता होता है, like there are few people, few students we know, even when you come across in life कि ये तो ऊपर जाएगा, ये तो बहुत ही ऊपर जाएगा। JRship is a compromise which I think अब तो आप खुश हो उस डिसीजन से। हाँ डेफिनेटली। एंड उस टाइम फिर बुरा लगता है सुनना। हाँ हाँ सर, उस टाइम थोड़ा सा लगा था कि मेरे काफी बैचमेट्स थे और नॉन थे जिन्होंने ज्वाइन करा, तो एवरीबॉडी यूज्ड टू क्वेश्चन यार जॉब्स होती नहीं और तू जॉब्स छोड़े जा रहा है, तू कैसे कर रहा है ऐसे। देन सफदरजंग में अगेन आई गॉट क्लियर्ड, तो सफदरजंग में भी जेआरशिप मिली। बट अगेन आई थॉट कि अब फुल फोकस करके आई शुड प्रिपेयर फॉर नीट एमडीएस, कहीं बाद में ऐसे एक एक्सक्यूज ना बन जाए दैट आई डिड नॉट गिव माय बेस्ट एंड आई शुड ड्रॉप अगेन। तो आई वेंट अप, आई स्टडीड डिसिप्लिन वाइज, मैंने स्टडी करा। आई यूज टू वेक अप एट 4 AM एंड स्लीप एट 10, बिकॉज मैं टाइम टेबल के साथ मैसअप नहीं कर सकता था हेल्थ कंडीशंस की वजह से। माई my parents were really supportive. They helped me to take the decision of drop, and finally I'm here. Wow. Matlab, you are making it sound easy, bete, but I am sure it was not easy. To Now, deal with a health condition which is scary, है ना, which is very scary, and then to study and then again rise. मैंने देखा ही ना, like you have given up, then you rose again, then again कुछ हुआ and then again you rose. So you are a true warrior. I remember the time you had discussed papillary carcinoma with me 3 years back. Like it was कहना आसान है, but झेला तो आपने है. Like you have overcome that like carcinoma, which is like itself is a dangerous to hear. Imagine somebody who has gone through. yes, You थोड़ा time it was a very low phase of our life. मतलब फैमिली भी पूरा काफी डाउन चले गए थे, but then things turned out well. जो अच्छा है उसमें उसमें खुश रहना चाहिए, एंड prognosis turned out well, सब ठीक रहा। then I thought कि I have this new chance, so let's make it a king size life और थोड़ा सा और पुश करते हैं। You have made it king size. And इससे आगे, of course, you are going to rise only. Thank you so much, ma'am. And अच्छा बेटा ये बताओ, which one, when you were giving the exam, how was the exam? कैसा feel हो रहा था? Was it easy, difficult, कि you thought कि I'll do it? मैम जैसे एज सर एज डिस्कस कि हमें राउंड्स में पेपर करना है, तो फर्स्ट राउंड इटसेल्फ शोड मी कि हाँ सब कुछ पढ़ाया हुआ है, सब नोट से है। देयर इज नथिंग टू मतलब वैसे वाइल्ड गेस या ओवर अटेम्प्ट करने के एग्जैजरेटेड अटेम्प्ट्स हमें खुद नहीं करने पड़ेंगे। राउंड वन रियली वेल। देन आफ्टर दैट इवन इनफैक्ट राउंड टू में भी काफी स्ट्रेटजीज थी, जैसे एलिमिनेशन जब हम टीएनडी में देखते थे हाउ स्टाफ यूज टू eliminate all the options, तो उससे भी काफी हेल्प मिली। ओवरऑल Okay. इट वाज अ डिसेंट पेपर जस्ट बिकॉज पढ़ा हुआ था सब कुछ। अदरवाइज आई हैव हर्ड मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स जो कहते थे कि इट वाज अ टफ Yes. पेपर। नहीं, surprisingly बेटा, all our students were like very happy. Okay, we were happy that day. today Okay. also we are very happy for a very Yes. very great result. Yes, I was not able to speak after the result. So many like you were calling. Abhi bhi It was messages really and calls overwhelming. are pouring in, but yes, like you guys made our day, made our life, made our year 2024 sound much bigger for us actually now. हमें मेरे को याद है रात रात तक की मैम काफी चीजें अपडेट शेयर करती थी व्हाट्सएप पे भी कि नहीं इसका ड्रग ऑफ चॉइस ये है, तो वो सब चीजें ऐड ऑन होती है एंड वी फाइनली गेट दैट। तो आई एम तो रियली बेस्टोर्ड एंड
डाउन टुवर्ड्स यू कि आप ही वजह से सब कुछ हुआ है। नहीं बेटा, इट इज योर विक्ट्री, यू हैव डन इट, मतलब वी टीच, बट आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। सो थैंक यू हाउ मैम। वाज बेटा, हाउ डिड यू कीप अप योर लाइक, जैसे कहते हैं ना, जोश कैसे रखा? हाउ डिड यू कीप अप स्टडिंग सो मेनी आवर्स डेली रिपीटेडली? मैम आई यूज टू मेक अ टाइम टेबल सच दैट कि थोड़े थोड़े टाइम में आई गेट सम फ्रेश मोमेंट्स की हाँ ठीक है। एक तो मैम डिसिप्लिन था कि वंस यू मेक दैट हैबिट 21 डेज की तो अपने आप ही चीजें होती रहती हैं। नेक्स्ट कभी कभी ऐसा होता था सेटबैक्स की पढ़े ही जा रहे हैं एंड एवरी ऑल ऑफ आवर फ्रेंड्स आर सेटल्ड, ऐसे कुछ थॉट्स आते थे। बट आई यूज टू मेक अ हैबिट कि संडे को 2 to 3 आवर्स में थोड़ा सा जॉली टाइम रखता था अपने लिए एंड रेस्ट ऑफ द टाइम आई गेस थोड़े थोड़े बीच में टवर्क्स थे। माय माय सिस्टर इज आल्सो एट होम, तो वो भी प्रिपरेशन फेज में है अपने। सो वी यूज टू कि चल ठीक है, हम एक थोड़ा सा टाइम डे का रखेंगे जिसमें हम सीरीज देखेंगे या कुछ देखेंगे एंड वी विल फ्रेशन अप आवरसेल्व्स। तो वो एक सपोर्ट की वजह से भी थोड़ा सा हो That's पाया। right. What's your sister doing? She's preparing for medical? यस यस मैम। Okay. Younger sister? यंगर सिस्टर। Oh, wow. So she has, someone to look up to. You have already set a benchmark. It happens when you make something possible, na, even the siblings or anyone, who's looking at you will say, I can also do it. And beta, which subject did you like really find difficult and easy in the paper? मैम इजी वैसे तो मैम ये था कि सब्जेक्ट्स पर इक्वली कवर्ड, तो आई कैन नॉट से कि कौन सा इजी डिफिकल्ट था, बट यस अगर .2 .1 उससे कहना हो तो इजी वाज कॉन्स एंडो एंड मेडिसिन एंड डिफिकल्ट थोड़ा सा पेरियो, जस्ट बिकॉज वो पल्स थोड़ी बड़ी थी तो आई यूज्ड टू बी रिलक्टेंट कि उसको उठाने में डर लगता था। Yes. So what was your strategy? Matlab, let us really put a light on this. What was your strategy? First notes, then questions, then notes. मैम आई यूज्ड टू फर्स्ट टू नोट्स। मैं Hmm. मतलब एज आई स्टार्टेड द प्रिपरेशन, क्योंकि ड्रॉप ईयर में इनिशियली आई यूज टू लुक अप टू नोट्स फर्स्ट एंड देन डू द क्वेश्चंस। एंड थोड़ा सा मैंने जो सीखा है कि इंस्टेड ऑफ रेफरिंग टू मेनी सोर्सेज वी शुड स्टिक ऑन टू वन थिंग। मैंने लास्ट ईयर काफी सारे टेस्ट और सब ज्वाइन करके काफी मैसअप कर दिया था। आई यूज टू हैव सो मेनी शीट्स एंड ऑल जो कि सही एक जगह पे नहीं थी। बट इन माई ड्रॉप ईयर आई इंश्योर कि मैं पहले क्वेश्चंस करूंगा टू फाइंड आउट कि क्या मेरे वीक पॉइंट्स हैं। देन आई यूज Yeah. टू गो बैक स्टडी देम एंड इंश्योर कि सब कुछ नोट्स के अंदर ही हो, सो दैट एक सिंगल जगह पे सारे पॉइंट्स मिल जाए। आई नीड नॉट टू Very रेफर डिफरेंट एरियाज। No, very good. So say, मतलब the toppers actually study smart. Intelligent तो of course वो होते ही हैं, but वो studied smartly. So that was one plus point. Dr. एंड Khushal, एक मैम क्वेश्चन प्लीज, या सॉरी। बताओ एक बेटे. एक और चीज ये कहूंगा कि देयर वाज वन पर्टिकुलर थिंग व्हिच आई मेड जो कि काफी बेनिफिशियल रही। जैसे जैसे शॉर्ट शॉर्ट प्रोवाइड हुए थे, सो हम्म. आई आल्सो मेड माय पर्सनल छोटी, एक मैं उसको छोटी कॉपी बोलता हूँ कि मैं उसके अंदर आई यूज राइट डाउन कि क्या क्या टॉपिक्स है जिनको आई नीड टू रेफर ऑन एंड ऑफ, लाइक एज ऑफ फॉन्टेनेल्स, डीएम Hmm. वैल्यूज, मेडिसिन, Yes. व्हाट डायग्नोस्टिक टेस्ट्स आर डन। तो वो एक छोटी सी कॉपी थी अराउंड 20 पेजेस की, 23 पेजेस की। तो तो नाम दे देते हैं डॉक्टर खुशहाल शो शॉट। और क्या है, दैट इज लाइक स्मार्टेस्ट थिंग, लाइक That was a very smart move. क्योंकि ना एक फीलिंग आनी शुरू हो जाती है प्रिपरेशन में, यार ये तो आने के चांसेस हैं यार, लाइक इफ यू आर well read of entire subject, you can start thinking on the lines of examiner at times. Hmm. और What एक were you asking? हाँ, लाइक जनरल क्वेश्चन टॉप रैंकर से सब जानना चाहते हैं कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, बिकॉज ये लास्ट आप टाइम भी बता बहुत सकते हो, मैं नहीं बता सकता। लास्ट मैंने बहुत कम अटेम्प्ट करा था एंड दिस टाइम मैंने जब आपसे डिस्कस भी करा व्हाट्सएप पे, सो टोल्ड मैंने उसी तरीके से अटेम्प्ट करा। आई अटेम्प्टेड 225 प्लस 230 टू बी श्योर, टू बी स्पेसिफिक 230 अटेम्प्ट करा। आई लेफ्ट 10 क्वेश्चंस एंड यस अटेम्प्ट उतना तो करना ही पड़ता है बिकॉज अदरवाइज इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू लैंड अप इन अंडर 300 200 रैंक्स। जस्ट वन से, यस सर। ये ऑसम, लाइक सी
that's a minimal attempt if you are aiming for single or double digit rank. That's what I believe. The pattern has never changed actually. अगर आप 20 साल पहले का भी रिकॉर्ड निकालोगे ना, सब सेम था. Just the number of questions, maybe level of questions, pattern of questions is changed. कोई भी इंडिया का कोई भी एग्जाम उठा लो, पता नहीं, these are on the same statistical lines. Yes, sir. एंड देन एक दो क्वेश्चंस जो बच्चे बार बार आपको भी तंग करेंगे फोन कर करके पूछने के लिए, जो इस साल प्रिपेयर करेंगे, स्पेशली फ्रॉम योर कॉलेज एंड योर फैन क्लब विच विल बी क्रिएटेड नाउ, कि कितने घंटे पढ़ाई करते थे, और ये Like how many hours did you put in? हाउ मेनी आवर्स यू यूज्ड टू स्लीप, ऐसा क्या खाते थे कि ये सब याद हो जाए, या फिर कुछ सब्जेक्ट्स जो याद ही नहीं होते, लाइक फार्मैक, डीएम एंड ऑल, तो कुछ स्पेशल यू माइट हैव For done. Pharmac. Pharmac is like biggest fear. Yes, ma'am. I agree with that. So initially, sir, जब मैंने preparation start करी, I made it कि मैं 4 या 5 hours से start करूंगा. So 2-3 ने उससे पढ़ा. Then थोड़ा सा momentum बना है कि थोड़ा सा मैं पुराने setback से बाहर आया. Then I started studying for 7 hours. Then NEET तक आते आते it went up to 10-11 hours. क्योंकि उससे ज्यादा I could not, मतलब थोड़ा सा brain fogging ज्यादा हो जाती थी. Of course. And इसमें भी मैम आई मेड इट अ पॉइंट कि टाइम टेबल एकदम टू द पॉइंट रहे. आई यूज्ड टू स्लीप 7.5 hours, 6 hours. एंड कि ये था कि हेल्थ कंडीशन वाज द बिगेस्ट सेटबैक लास्ट ईयर. तो इस टाइम मुझे अपनी हेल्थ प्रायोरिटी रखनी थी. आई यूज्ड टू एक्सरसाइज, आई यूज्ड टू इंश्योर कि हाँ सब सही रहे एकदम, एवरीथिंग. And talking about subjects, pharma was a big challenge. In fact, medicine में भी data याद करना was a big challenge. DM में भी. So first of all, I made a separate A3 size की मैंने sheets बनाई थी for every subject, जिसमें मैंने कुछ specific, जैसे सर बोलते हैं कि वो जो 100% one word answers होते हैं, तो उसको तो मैंने उसमें लिखा था. like values की मैंने sheets बना ली थी. I used to read them like a newspaper in the morning. चाय टाइम पे, टी टाइम पे I used to read like a newspaper. A3 बड़ा हो गया, A3. हाँ, तो A3 पे आई यूज्ड टू मेक दैट न्यूज़पेपर लाइक थिंग. तो हर सब्जेक्ट की वो मैंने बना ली थी. फार्मेक वाज अ बिग चैलेंज. तो उसकी क्लासिफिकेशंस आई मेड श्योर कि मैं एवरी वीक जरूर देख रहा हूँ, 3 days के इंटरवल में. Very good. एंड लास्टली मैंने, मतलब फार्मेक वाज द लास्ट सब्जेक्ट व्हिच आई कंप्लीटेड सो दैट कि मैं लास्ट याद रख सकूं. जस्ट 1 week बिफोर एग्जाम आई वेंट थ्रू एंटायर फार्मेक, ड्रग ऑफ एंड एवरीथिंग which was provided. So बस सर वही था कि फार्मेक को जुगाड़ू तरीके से आई kept on learning and remembering so that जितना हो सकता है I could recall. Okay. And anatomy? Well, medical subjects usually scare students, है ना? But this time dental was a little tricky, or I should say more like twisted. Yes, ma'am. Clinical questions were there. So clinical questions में because test series भी थोड़ा इस तरीके से थी कि हम arrive कर पा रहे थे. And Okay. and you have also told, and the mentors have also told, teachers have also told कि how to look what is being asked in the clinical question. So that helped a lot. कि पूरा question से बढ़िया है how to arrive at the point कि वो पूछना होता है, then arrive at the answer. So that was the thing which helped. Apart from that, तो evergreen हो तो याद ही रखनी है. And how did you go about the revision? Revision, like how many times you did it? Ma'am, 3 times I revised it this time. 3 times revise करा. Physio medicine notes से so yes, मैं 2 times I went through it. उसके बाद I went questions so that मैं questions से याद कर पाऊँ. करना questions were really good. तो उससे करते करते ऐसा लगता था कि we have revised everything. Yes, absolutely. And भी I went through GRG. मैं मतलब if I accept it, yes, I did GRG. तो उसके अंदर it helped me to मतलब एक तरीके से recall memory बन गई थी उसकी वजह से. Of course. Of course. It's good, like you referred to the best of text and everything, and had faith in what you were studying. Actually, that is more important. Definitely, sir. वही की है कि whatever is being taught by the teachers, we should not question it. Otherwise, तो ये तैयारी never ending है. So खत्म ही नहीं होगा, डाउट्स खत्म ही नहीं होते कभी. देखा है आपने ग्रुप्स में. And during this journey, beta, matlab, did you doubt yourself once even? Okay, I won't be able to make it. Ma'am, initially it was there once I had taken the drop, but over the time, जैसे जैसे I went through the text and मेरे friends का जैसे friend group था, जो study group था, eventually
से एक दूसरे के क्वेश्चंस को आंसर करते करते वी डेवलप दैट काइंड ऑफ अ मोमेंटम कि नहीं यार हो सकता है इस बार, इट्स नॉट डिफिकल्ट टू अचीव, हो It सकता is है। possible. Yes, everybody is studying the same thing, so we just need to recall and revise it to the point, तो हो सकता है, everything is possible. And Dr. Kushal, you are a bright student, है ना? But is it possible for a normal student? मतलब, does it matter how well you have studied in college? Ma'am, Did definitely, because yes. अगर हम मतलब if I speak about my example, I used to study in college so much कि मैं internship में आके lag behind हो गया. If I had not lagged behind internship, I suppose कि मैं शायद first attempt में ही इसको ज़्यादा better score ला पाता. And those they की average marks में है, they have that kind of momentum to be maintained during internship. वो उन्होंने मतलब I used to say कि यार उन्होंने दोनों life जी है. They have enjoyed, they have studied also. So internship में वो ज़्यादा बढ़िया output दे पाते हैं. So Yes. eventually, yes, everyone can clear it. It's a matter of doing the questions right. Question bank तो सर कहते हैं कि क्वेश्चन बैंक तो सेम ही रहना है, उसमें से ही सब आना है, तो उसको जितना हो सकता है। आप 6 to 7 months we require preparation, है ना? Serious preparation. And for you, beta, I think आपका तो you had a very valid reason. Very valid reason. है ना? For not studying during internship. Now तो you have got such a great rank to be proud of. Thank And you. I'm personally very proud of you, Peter. You know, since the time I met you, I remember I saw that scar, but I didn't ask at that time. And I was like, हाँ मैं समझ तो गई थी कुछ हुआ है. But then Dr. Amit told me कि, you know, this has happened. And I was like, such a brave kid. You came for class that day. And literally you are a brave kid. Thank you, ma'am. Your parents are nearby, Bete. You want to Yes, ask? पापा मम्मी। Sir, my mother. Hello. Hello, ma'am. Congratulations. Congratulations, ma'am. Well, thank you. Ma'am, it's your victory also. आपकी भी जीत है ये. सच में. Definitely. He's very hardworking. Yes, ma'am. मैम आवाज नहीं आ रही. He's very hardworking child. I'm proud of him. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, beta. You know, this is Dr. Khushal. This is the best moment. When, you know, the mom says, no, I'm proud of you. He always Best होता है. Better than any result. हाँ जी. he wants your blessings. नहीं, ma'am, it's all his effort and your blessings, ma'am. You Yeah. also have worked equally hard with him. Yeah. Ma'am, father. Hello, hello, sir. बहुत मुबारक. Congratulations, sir. Thank He's you a so much. very good child, sir, and he's going to go very far in life. मैम मैं तो वो याद करता हूँ कि like हनुमान जी was having so much power, still he needed Jamwant who can just spark that trigger that spark in him, and I think people like you are the one who are triggering that. So वो तो ये पहली टर्म में भी था, but this time he did that. He I think he followed you people, and I think God sent people like these to help us. Thank you, sir. Again, Congratulations बहुत once again, sir. Once again. मुबारक. This is an amazing moment. Now today is Khushali at your home. A lot. Moment. पता है, when you do this, no, any result, any happiness, nothing counts, you know. In front of parents, nothing counts. है ना? Exactly. And you know, I just share one kind. thing, Khushal. मतलब अगर sometimes मतलब before, no, I used to even sneeze, I used to get upset. As today, I will not work. And many people do like this. I'm having fever, I will not work. And you have, really challenged me today. Okay, nothing is impossible. I will remember you, pata hai, full life I'm going to remember you. Thank you so much, ma'am. It's so kind of you and generous of you to say that. We'll discuss details about counseling soon, so don't leave your WhatsApp group. And anything you can call and message. Again, it's a long task we left out to choose the right college and right branch. We'll definitely help you out with that. But uske Thank you liye so much. only one-to-one discussion, no discussion on groups and all. Definitely. Definitely.
Thank you. Have a great day. Congratulations once again. Yes, Thank you, congratulations, ma'am. Bete. And thank you to all the teachers as well. मैं personally मिल पाता तो I would have said them thank you so much. Like we'll meet up in person only very soon. We will meet, Bete. Thank you, Okay, ma'am. and best wishes for health also. Okay? Thank you, ma'am. Thank you so Take much. care. Take care, Bete. Bye. Bye, ma'am.